So today we will discuss degenerative disease of basal ganglia, and next time we will also discuss Parkinsonism. Okay? Now degenerative disease are disorders of known etiology and pathogenesis, characterized pathologically by progressive loss of central nervous system neurons and their processes, accompanied by fibrillary astrocytosis. Now, fibrillary astrocytomas are a group of primary slow-growing brain tumors that typically occur in adults between the age of 20 and 50. The identification of these diseases depend upon exclusion of diseases with known etiology such as metabolic disturbances, vascular disease, nutrition deficiencies, or infection. कौन कौन सी इन्फेक्शन हो सकती है, कौन कौन से ऑर्गन इन्फेक्शन कर सकते हैं मेरा बेटा, जरा बताओ। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को ये तो बताए थे। वेकेशन वाली बेटी से पूछो, पहले आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं मेरे बेटे ये सब लोग जल्दी। हाँ भाई, ये वेकेशन वाली बेटी, अरे अच्छी बेटी, अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे। मेरा बेटा ये बताओ कौन कौन से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और ऑर्गेनिज्म्स इन्फेक्शन की बात है, मैं रुका हूँ इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत साथ जोश बात है, असल लोग पढ़ने वाली बच्ची है और बोर्ड बच्ची है, लेकिन रोज तो जगह को लेकर स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेजेरिया वगैरह हो सकता है। अच्छा तो यार मेरा बेटा सब चीजें जैसे हैं चाइनीज में बात करना। अच्छा हाँ भाई ये बड़ी ना ये तो देगा और देगा जी। हाँ सीरियस इन्फेक्शन ये मेरी बेटी का स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होती है, तो कोई स्ट्रेप्टोकोकल सीरियस इन्फेक्शन कराती है क्या? कौन सी इन्फेक्शन कराती है? ठीक है। और अरे मेरा बेटा और ऑर्गन पूछ रहा हूँ। ओके अच्छा बेटा, बेटा ये बताओ प्रोटोजोआ कोई करवाता है? एक मिनट, तो प्रोटोजोआ करवाता है सीरियस इन्फेक्शन? चलो इधर ही आ जाता हूँ, इधर ही आ क्या कह रहे हैं? 50-50 ऑप्शन सुनाते नहीं लाइट आना। हाँ ये जो बेटी बोल रही थी देखो ये बताइए नहीं आता। अरे भाई नेगेटिव कॉलोनी का नाम सुना होगा आपने, ग्रेविटी अमीबा भी कहलाता है, अकेंथा अमीबा भी है, ठीक है ना। और वायरसेस है जो सीरियस इन्फेक्शन कराते हैं, वो सारी मेरी बेटी। Now, a considerable proportion of degenerative disorders are genetic in origin, with either dominant or recessive inheritance. Other occurs sporadically. Family history is of course of great importance. Now, the degenerative disorders usually begin insidiously and have a gradual progressive course over many years. In virtually all cases, the lesions have characteristics bilaterally symmetric distribution. Another striking characteristics of the degenerative disorders is that particular anatomic or physiologic system of neurons may be selectively affected, leaving others entirely intact. अच्छा देखो इसमें एक बात ये अब एक उसकी बात करेंगे। न्यूरॉन्स जो हैं ये may be selectively affected, leaving others entirely intact। तो कई इन्फेक्शन ऐसी होती हैं जिसमें न्यूरॉन इफेक्ट होते हैं लेकिन बाकी बॉडी पर असर कोई इतना नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या कोई ऐसी डिजीज है जिसमें न्यूरॉन के इफेक्ट होता है बॉडी पे भी असर पड़े? यकीन करो मेरी बेटी आउट ऑफ कोर्स नहीं पूछ रहा हूँ, इस जगह नहीं आता कोई बात नहीं, मुझे तो फाइनल तक कुछ नहीं आता, इसलिए प्रोफेसर
हाँ भाई ये बेटा फिर चाहिए ये अलामत इधर बेटा है सवाल पूछे सर ये बेटा न्यूरो साइंस मॉड्यूल डीजेनरेटिव डिसऑर्डर मैं ये पूछूं मेरे बेटा कि अमूमन न्यूरो पे ये बता रहे हैं कि डीजेनरेटिव में न्यूरॉन जब इफेक्ट होते हैं तो बॉडी के दूसरे पार्ट में उनको ऐसा बात तो मसल वेस्टिंग वगैरह म्यूटिक में जवाब मौजूद तो कोई ऐसी डिजीज है जिसमें न्यूरॉन इफेक्ट और मसल वेस्टिंग भी हो जी ओके ठीक है मैं इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ इसमें वायरस या बैक्टीरिया इन्वॉल्व है देसी है देसी वायरस आप लोग सब जो है ना पीछे बड़ा सा पेट में भरोसा दिला रहे हैं हालांकि इबादत के हाथ में बैठे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि बच्चा पमीरो बना चाहिए देखो जी मेरी बेटी लाल में बैठी है कोई ऐसा वायरस है जिससे वो बच्चों को हो जाए न्यूरॉन इफेक्ट हाथ पैर की नजदीक हो जाए दैट इज थोड़ा जगह होता है वो कॉन्सेप्ट मैंने कहा लेक्चर एक टॉपिक लेकिन डिस्कस सारी चीजें डिस्कस करते चलेंगे now another striking characteristic of the degenerative disorder is that particular anatomic of the system neuron will be affected leaving other entire intact ये पढ़ चुके हैं now classification of degenerative diseases into individual syndromes is based on the clinical aspects and anatomic distribution of the lesions. Some of the more common degenerative diseases are Alzheimer's disease, Pick's disease, Huntington's disease, Parkinson's disease, cerebral cortical degeneration, spinal cerebral atrophy, motor neuron disease. तो जब मैं गांव में वायरल ले रहा था पिछले 10-15 साल से तो जब ये सवाल हमारे पास आता था तो आपको 3 कोई से नाम बाद में भूल जाते हैं घबराहट होगी नाश्ता तो एटलीस्ट 3 के नाम तो कम से कम पता होने चाहिए ठीक है बेटा वो पता तो सारे होने चाहिए लेकिन 3 के जवाब लोग हम क्वेश्चन सही माने ना Parkinsonism. It is a syndrome of chronic progressive disorder of motor function and is clinically characterized by tremors which are more conspicuous at rest and worsen with emotional stress. Other features are rigidity and disordered gait and posture. तो ये ज्यादातर किन प्रोफेशन वालों को होता है पार्थिक नहीं यार वो बेचारा पिछली बार बड़ी जाएगी एक क्या कह रही हो बेगम से बेटे मतलब क्या कह रही हो अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे ऐसे आवाज है एंटी अरे जन्नती मेरा बेटा वही हो गया कौन से मोहम्मद कौन सा प्रोफेशन करता है बॉक्सर हो जाता है जो ज्यादा मुक्ति यहाँ पढ़ते हैं इसी तरह शायद जिनको 4-5 साल तो उनको भी यहाँ वो भी खतरा होता है पाकिस्तान में Now Parkinsonism is caused by several degenerative diseases, the most important being Parkinson's disease. Other causes of Parkinsonism are trauma, toxic agents, and drugs that is dopamine antagonist. Toxic agents. कोई बता सकता है मुझे एक टॉक्सिक एजेंट वो केमिकल होते हैं बेटा जो हम इनहेल कर लेते हैं जैसे आपकी जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं इनमें खास तौर पे क्या होता है ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड वगैरह क्या बात है आप लोग पहले वेकेशन पे चले गए हो Parkinson disease region affected basal ganglia and brain stem main features abnormalities of posture and movement फिर थोड़ा सा एक इसको कंपेयर करने की दूसरी डिजीज का जिक्र कर लिया हंटिंगटन डिजीज रीजन अफेक्टेड इसमें बेसल गैंग्लिया बेसल स्टेम अफेक्ट होते हैं मेन फीचर प्रोग्रेसिव डिमेंशिया विद कोलिफॉर्म मूवमेंट्स व्हाट इज डिमेंशिया डिमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी तो मेरी बेटी मेडिकली क्या एज है जिसके बाद जाती है ये हम कहते हैं इस बार डिमेंशिया होता है 65 ठीक है
जब हम और आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं ना ऑस्ट्रेलिया या यूके या हॉस्पिटल में जॉब के लिए, जो फाइनल इंटरव्यू होता है, तो ऐसे ऐसे सवाल पूछने हो कि मतलब now grossly the brain is atrophic or maybe normal externally. Microscopically, the hallmark is depigmentation of substantia nigra and locus coeruleus due to loss neuromelanin pigment from neurons and accumulation of neuromelanin pigment in the glial cells. Some of the residual neurons in these areas contain intracytoplasmic eosinophilic elongated inclusions called Lewy bodies. इसमें आपको लीवी बॉडीज की डेफिनेशन बता दी है। अगर आपसे पूछे बता लीवी बॉडीज, ठीक है ना। जब हम दाव में बायो लेते हैं तो अमूमन जो हमारे पास 15 क्वेश्चन होते हैं, पहले 10 में हम आपको मार्क्स देते हैं, बाद में 5 क्वेश्चन मार्क्स पर, बाद में 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 15 इसलिए होते हैं कि अगर 10 में ज़्यादा जवाब दीजिए तो आपका चॉइस हम आगे और पूछते चले जाते हैं, चाहे कोई जवाब दे दें, ठीक है। तो लीवी बॉडीज ये हम पूछते रहे हैं न्यूरोसाइंस मॉड्यूल, ठीक है। मैंने सारी वो चीजें रखी हैं जो वाइवा में पूछी जाती हैं, उसी तरकीब से पूछ रही है। और बेसल गैंग्लिया, इसमें क्या हुआ, रेस्टिंग ट्रेमर, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, फैसिनेशन, रिजिडिटी, मास फेशीज, मेन जो इसमें जो है, जो हम पहले सुनना चाहते हैं बच्चों, तो वही है मास फेशीज, ठीक है। देन ब्रेडिकाइनेसिया, डिस्काइनेसिया, torticollis, chorea, acidosis, hemiballismus and akathisia. Now basal ganglia lesions produce contralateral signs. Cerebellar lesions produce ipsilateral signs. Contralateral signs, ipsilateral signs. नहीं परेशान हो, मुझे डर जाके दुख हुआ, मैंने विचार से सारे सवाल किए। साहब आ जाओ उस तरफ, हमारे भी एक दोस्त के निशान था, कितना बड़ा यहाँ पे ना, बनने का यार हम लोग को निशान कैसे आ गया, पहले एक ही दिन में बेगम डाल देते प्राय मारते ना। बेटा कि कॉन्ट्रालेटरल क्या होते हैं बेटी, एक मिनट, और आप यहाँ किसी बच्ची से पूछता है अल्लाह को करके आपको अल्लाह अच्छा बड़ा डॉक्टर होना है, आमीन तो कहते हैं। ये आमीन साहब बात करें, वेरी गुड, मौका खुद बोल दीजिए। मैं यहाँ आने से पहले मौका दे दीजिए, इजाजत देता हूँ कि भाई आ जाओ उधर। नाउ देन most movement disorders produced by cerebellar and basal ganglia pathologically disappear during sleep. Cerebellar and basal ganglia signs are usually not present if the corticospinal tract is damaged. ये पॉइंट देखो काम का है, cerebellar and basal ganglia signs are usually not present if the corticospinal tract is damaged. Now degenerative brain disease, the term degenerative reflecting an underlying cellular degeneration of neurons in the brain, cause symptoms that depend on the pattern of involvement of the brain. Parkinsonism, बार बार मैं रिपीट करूंगा, इसकी डेफिनेशन हो सकता है इसकी 2-3 स्लाइड और है सेम सीट पे, ठीक है ना। A clinical syndrome characterized by diminished facial activity, that is masked facies, stopped posture, slowness of voluntary movement, fascinating gait, rigidity, pill rolling tremor. Now Parkinson motor disturbance seen in a number of conditions that share damage to dopamine-producing neurons of substantia nigra or their projection to the striatum. Parkinson can be induced by drugs that affect these neurons, particularly dopamine antagonists and toxins. पोस्ट एंसेफेलाइटिक पार्किंसनिज्म, कौन सी ड्रग्स की बात हो रही थी बेटा, डोपामीन एंटागोनिस्ट, ठीक है। इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज, द मोस्ट कॉमन नॉन न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीज एसोसिएटेड विद पार्किंसनिज्म, अदर न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीज आर रेयर, दैट इज हेड ट्रॉमा एंड स्ट्रोक उसमें होता है।
पार्किंसन डिजीज 6 to 8 डिकेड से ये मौजूद है, जिसे हम जो अपनी मेडिकल उसके हिसाब से चल रहे हैं, रिसर्च के हिसाब से। मोर देन 2% नॉर्थ अमेरिका डेवलप डिजीज, मेन में ज्यादा होता है, मोर देन, ठीक है, 22 आउट ऑफ 100,000 में होता है। गुड प्रेवलेंस रेट इन साउथ एशियन पॉपुलेशन। ये मेरे कजन से पहला सवाल हुआ था जब वो बैठा था कि सर हम आपको कल एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपको देखना पड़ेगा, ये वो निकल कर जाएगा, यू आर रेडी, व्हाट इज प्रेवलेंस, नहीं मुंह बनाने की जरूरत नहीं, इतनी इंटेलिजेंट बेटी हो मुंह बना रही, व्हाट इज प्रेवलेंस बेटा, आप इंटेलिजेंट को जवाब दे। कोई बात नहीं, plus number of incidents. पूरी जरूरत नहीं, बहुत ही बताया, सही बता रही हूँ। हिम्मत करता हूँ आगे बढ़ने की, बड़े थे हमारे आज आ जाओ इधर है, ये साथ बहुत पूरी करते हैं। नहीं आता कोई बात नहीं, आप नहीं बता रहे तो होना साथ बहुत गुस्सा आता है, आगे में देखते हैं सर आप क्या नहीं सोच, ठीक है। Number of cases of a disease in a specific population in a specified time in a designated area is known as prevalence. और frequency क्या होती है? Occurrence of disease. ठीक है? Now, while most Parkinson's disease is sporadic, there are both autosomal dominant and recessive form of the disease. Genetic analysis has identified specific causal mutations. For example, alpha-synuclein mutation cause autosomal dominant Parkinson's disease, as can gene duplication and triplications. Even in the case of Parkinson's disease, not caused by mutation in this gene, the diagnostic feature disease, the Lewy bodies, is an inclusion containing alpha-synuclein. This is widely expressed neuronal protein that involves synaptic transmission and other cellular processes. तो बेटा पार्किंसन में हमें पेशेंट का चेक करना है, पेशेंट आपके पास है नहीं, सबसे पहले टेस्ट कौन सा करेंगे? क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, टेस्ट नहीं होता, अल्लाह नसीब अच्छा करे आपका, कोई तकलीफ चलो किसी हद तक जवाब मान लेते हैं आपका। क्या कोई टेस्ट वगैरह कराना पड़ता है इसके लिए? हाँ भाई टेस्ट बेटी कौन सा कराएंगे? देखो मेरा बेटा, अब समझो मेरे का जवाब क्या है, न्यूरल डिजेनरेशन हो रही है, तो क्या एक्सरे देखना पड़ता है कि सबसे न्यूरल डिजेनरेशन हुई है, डिजेनरेशन हुई है और सेरेब्रल कौन से डिजेनरेशन हुई है, तो किसको देनी है? हाँ क्या कहा इन्होंने? हाँ DTN है हमारे क्या? Now, however, the alteration in sequence of protein level resulting in disease is unclear. देखो बेटा अब आपका जवाब देखो. However, the alteration in sequence of protein level resulting in the disease is unclear. The presence of alpha-synuclein in the Lewy bodies has suggested that the defective degeneration of proteins in the proteasome might play a role. This is supported by identification of two other genetic loci for Parkinson's disease, which involve genes encoding Parkin and E3 ubiquitin ligase and UCHL1, the enzyme involved in recovery of ubiquitin from proteins targeted to the proteasome. Neurosurgeon किसको शौक करते हैं? कोई शौक है वहां साहब न्यूरोसर्जन वगैरह बनने का? नहीं, किसी को नहीं है। क्यों नहीं बनते लोग? वजह एक मिनट। हाँ क्या?
कॉम्प्लेक्सिटी, और 95% की इसमें डेथ होती है पेशेंट की, 95% पेशेंट की डेथ होती है। आपके पास आएगा हार्ट इंजरी का पेशेंट आएगा, ट्रॉमा का पेशेंट आएगा, आए सर ऑपरेट करें, अब आपको पता है पेशेंट ने बचना है नहीं, उसका लोग इंतजार में खड़े होंगे बाहर, सर आपने हमारा मरीज मार दिया, तो सर इसलिए लोग कम बनते हैं यूरोप पर, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं। नाउ पार्किंसन डिजीज, normal substantia nigra, deep pigmented substantia nigra. In idiopathic Parkinson disease, leafy body in substantia nigra neuron is turning bright pink. Then macroscopic में pallor of substantia nigra and locus coeruleus. Microscopic में loss of pigmented neurons in these regions associated with gliosis. Leafy body may be found in some of the neurons. नाराज है आप, मैंने पूछा नहीं आपसे? हाँ चलो फिर ठीक है ना, फिर क्यों तो फिर यार अल्लाह कुछ रखे। Now how the alterations in sequence of protein level result in disease is unclear. ये कर चुके हैं ना लोग, ये लोग ये भी हो चुका है, ये उल्टा चल रहा है यार बटन। कंप्यूटर मेरे साथ खेल रहा है, ये हो गया ना? नहीं हुआ था ना? आपको मानो कंप्यूटर ने आपको भी ये हो गया। अच्छा, लीवी बॉडी इज सिंगल और मल्टीपल इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक round to elongated inclusions that often have a dense or core surrounded by a pale halo. Ultrastructural leafy bodies are composed of fine filaments densely packed in the core but loose at the rim. These filaments are composed of alpha synuclein along with other proteins. Leafy bodies पढ़ लेना मेरे बेटा। आप हमें दो लाइन भी बता दोगे बाबा में ये इसने का ही हो गया। Now, L-dopatrophy is often extremely effective in symptomatic treatment, but it does not significantly alter the progressive nature of the disease. Over time, L-dopa becomes less effective at providing the patient with symptomatic relief and begins to cause fluctuations in motor function on its own. Fluctuation in motor function on its own. Usually progresses 10 to 15 years. Eventually, severe motor slowing to the point of near immobility. Death is usually as a result of intercurrent infection or trauma from frequent falls caused by postural instability. About 10 to 50% individuals with Parkinson's disease develop dementia, with the incidence increasing with advancing age. दोबारा लीवी बॉडी ये हो गया क्या? ये यार कंप्यूटर खेल रहा है मुझसे। ये तरीका जगाने का। Now, characteristic features of disorders include a fluctuating course and hallucinations. While many affected individuals also have pathologic evidence of Alzheimer's disease, the dementia in other parts of the disease patient is attributed to widely disseminated leafy bodies in cerebral cortex. Parkinson's disease has been targeted for many novel therapeutic approaches, including transplantation, gene therapy, and stem cell injection. Currently used neurosurgical approaches to Parkinson's disease include placement of lesions in the extrapyramidal system to compensate for the loss of nigrostriatal function or the placement of stimulating electrodes, deep brain stimulation. ये थेरेपी आपने अब तक कहाँ इस्तेमाल होते देखी यहाँ पे? कहाँ? मेरे बेटा 4 ईयर पे होना तो नो आउट होगी, दूसरे मेडिकल कॉलेज से भी टच होगी। ये कहाँ होती है देखिए थेरेपी अब तक? ये ट्रांसप्लांटेशन, जीन थेरेपी, ठीक है, और एक और जगह भी हो रही है। जेपीएमसी में 2 बंदे से चले गए ना, और दूसरी का बैठा है, वही पूछ रहा हूँ मुझे इलेक्शन में भाई है साउथ
Now, dementia with Lewy bodies, about 10 to 15% individuals with the disease, Parkinson's disease develop dementia. Character features are fluctuating course, hallucination, and prominent frontal signs. Some affected individuals have pathological evidence of Alzheimer's disease in combination finding of Parkinson's disease. In other, the more prominent histological correlates to presence of Lewy bodies. सर किस चीज का जिक्र आ रहा है भाई? These inclusions are less distinct than those observed in brainstem, but similarly contain predominantly alpha-synuclein. Immunohistochemical staining for alpha-synuclein also reveal the presence of abnormal neurites, which contain aggregated protein called Lewy neurites. इसका मैंने साथ में जिक्र किया कंपैरिजन के लिए, to differentiate करने के लिए. Autosomal dominant Huntington disease, characterized by progressive movement disorders as dementia and histologically by degeneration of striatal neurons. क्या क्या होगा? Jerky, hyperkinetic, sometimes dystonic movements involving all parts of the body, that is chorea. Morphology, striking atrophy of caudate nucleus, later in third ventricle dilatation, severe loss of neurons in striatum and gliosis. Clinical presentation, onset in 4th and 5th decade, movement disorders, chorea, cognitive dysfunction, progression to dementia, relentless progressive course of about 15 years, death from incurrent infection. Now morphology taking macroscopically. Brain is small, shows striking atrophy of caudate nucleus. On microscopic examination, loss of striatal neuron, the most marked changes are found in caudate nucleus. Pathologic changes develop in medial to lateral direction in caudate and from dorsal to ventral in putamen. Both the large and small neurons are affected, but loss of small neurons generally occurs first. Loss of small neurons generally occurs first. Now, two populations of neurons are relatively spared. The diaphoresis positive neurons that contain nitric oxide synthetase and the large cholinesterase posterior positive neurons. Now, fibrillar gliosis, direct relationship between the degree of degeneration in the striatum and severity of clinical symptoms. Protein aggregates containing Huntington's can be found in neurons in striatum and cerebral cortex. ये सारी यार आप लोग कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, कितने वीक से पढ़ते आ रहे हैं चीजें? जी, कौन सा वीक है मॉड्यूल का? ठीक, इसलिए आपको तंग नहीं करो ज्यादा, सब पढ़ते चले आ रहे होंगे आप लोग. Now Huntington disease, normal hemisphere on the left, normal hemisphere on the left compared with the hemisphere with the Huntington disease on the right, showing atrophy of the striatum and ventricular dilatation. ठीक है? Intra nuclear inclusions in neurons are highlighted by immunohistochemistry against ubiquitin. बेटा अगर हम हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग करते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्टेन कर रहे हैं माइक्रोस्कोपी देखने के लिए, तो कौन सी स्टेनिंग होती है हिस्टोलॉजिकल इस्तेमाल पूरा नाम अगर लिए तो कोई बात भूल जाती कोई आ गया. मैं जानता हूँ कौन सी. अरे जनरली बेटी मोबाइल में का जवाब दे रही हो, सोशल मीडिया पर आ गए जवाब, बताओ मुझे. पेरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन. यस यस, ठीक है ना. जब भी नाम मेरे बेटा फुल नहीं, अगर हम जाके वहां दूसरों में कॉन्सेप्ट के एग्रीगेशन इस्तेमाल करेंगे, दे विल नॉट कंसीडर इट. वो आपसे पूरा वसूलना चाहते हैं कॉन्सेप्ट. थैंक यू.